मैं डॉक्टर एन.के. चौबे, हेड पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सभी ऑफिशियल्स, टाइपेक पीएफसी से डॉक्टर यशवंत देव पनवार सर, पेटेंट ऑफिस मुंबई से डॉक्टर अजय ठाकुर, पेटेंट अटॉर्नी मिस्टर मोरे, और हमारे जो साथ में जिन्होंने पेटेंट होल्डर है और स्टार्टअप शुरू किया हुआ है मिस्टर आशुतोष राय और मिस्टर कल्ले खान, जिन्होंने चंदेरी साड़ी के चंदेरी फैब्रिक के जो मैन्युफैक्चरर हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आज हमने अपने इस कार्यक्रम में जोड़ा है। काउंसिल के सभी डायरेक्टर जनरल्स, ऑफिशियल्स, मेंबर सेक्रेटरीज और पार्टिसिपेंट्स, उन सभी का भी एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्वागत है। आज की स्वतंत्रता आजादी के अमृत महोत्सव के 12वें वेबिनार के सीरीज में आज आईपीआर का वेबिनार हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका एक छोटा सा जो बैकग्राउंड है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि India is celebrating 75th years of independence, and Honorable Prime Minister has desired to infuse new energy and new consciousness among the countrymen by so hosting and celebrating achievements of the last 75 years through Azadi ka Amrit Mahotsav. Department of Science and Technology, Government of India, State Science and Technology Council, and Patent Facilitation Center at TIFAC, New Delhi, is causing science, technology, and innovation ecosystem in states and union territories, and its contribution towards Nirbhar Bharat through a year-long program, Mahotsav, a festival of science. Under its state science and technology program, Mahotsav is being celebrating to portray the state-level STI ecosystem through month-wise themes. This is the 12th series of this series. The theme for the month of August 2022 is intellectual property rights. So, to fulfill the objectives of IPR ecosystem for Nirbhar Bharat state experiences, harnessing social economic benefits of IPRs, institutional policies and their role in harnessing IPR case studies. For these, we have invited the special guests, speakers, patent assistant controller, patent attorneys, and those who are working in IPR. They are IPR holders and they are using it for the commercialization and startup purpose. So, we welcome to Dr. Yashwant Dev Panwar, who is a special guest of today's program. Due to an urgent meeting with the Principal Secretary, our Director General will join later. He is in Mantralaya, so as soon as he becomes free from the meeting, he will join. So, in the meantime, I would like to request Dr. Panwar sir to share his valuable views. Before inviting him, I would like to give his brief introduction here. Dr. Yashwant Dev Panwar is a PhD from IIT Delhi in Management on IPR. He is also MTech in Future Studies and Planning from Devi Ahilya University, Indore. He completed his MSc Physics from MDS University, Ajmer, Rajasthan, with the specialization of microwave electronics. He is presently scientist as and heading Patent Facilitation Center of Technology Information Forecasting and Assessment Council, New Delhi, which is the part of Department of Science and Technology, Government of India. He has been working for more than 25 years for Patent Facilitation Center in different capacities. He is also leading and guiding to the state patent facilitation, patent information centers of all states. He is continuously supporting and giving the technical and the financial support as and where it is required. PFC has been facilitating filing of patent applications on behalf of academic institutions and government R&D institutions, creating awareness about IPRs in different parts of the country.
providing policy inputs to the government and also also the patent informations. He has taken as well as conducted number of trainings on IPRs, patent searches, and other IPRs and WTO issues. His contribution is involving the important programs are DST, Women Scientists, C, popularly known as Kiran IPR, at all stages. For his remarkable contribution, TriTech has received Nari Shakti Puraskar 2015 for this program. Dr. Panwar has also performed the internship on technology transfer at National Institutes of Health, United States of America, and also taken training in the European Patent Office and Japan Patent Office. These active areas of patent, intellectual property rights related researches are standards and patents, forecasting future skills based on patent data, new foresight, methodologies, base patent information, and AI and patents. With this introduction, I would like to invite Dr. Manwar for his valuable experience to share us. Welcome, sir. धन्यवाद चौबे जी। तो आज हम यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और वो भी IPR एज ए थीम एंड आई एम वेरी ग्लैड that all patent information centers in different states are taking this month, the August month, is with the theme of intellectual property in a science and technology and liberating minds from fear of stealing of their intellectual property rights by others by way of providing उसे कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे हम अपनी बौद्धिक संपदा को संरक्षित करें। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक विज्ञान उत्सव के रूप में पूरे साल से मनाया जा रहा है और अगस्त को स्पेशली IPR के लिए डेडिकेट किया है, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर चलाते हैं और कल एक बड़ी घटना हुई जिसका IPR से बहुत बड़ा संबंध है, तो सेलिब्रेशन का जो माहौल है वो दुगुना हो गया है और वो भी मध्य प्रदेश के साथ इस उत्सव में मुझे पहली बार शेयर करने का मौका मिल रहा है प्लेटफॉर्म पे। और इसकी जो चीज़ हुई है उसकी जड़ें मध्य प्रदेश में ही थी, उसी से निकली, उसी से आगे बढ़ी। तो मैं उस एक अनुभव को भी शेयर करना चाहूँगा उसके साथ। आप सबको मालूम होगा कि कल भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो TKDL है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, वो अब हम सभी लोगों को भी एक्सेसिबल होगी, हमारे वैज्ञानिकों को एक्सेसिबल होगी और हम लोग देख पाएंगे कि TKDL में क्या हमारा जो बौद्धिक संपदा है, जो सदियों से विकास किया हमने, वो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है और वो हमारे सारे वैज्ञानिकों को अब उनके कंप्यूटर सिस्टम पे एक्सेसिबल होगी। तो बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में what can be a greater moment than celebrating this during the Azadi Ka Amrit Mahotsav. So I think we should all join together, people who are on the WebEx as well as the people who are on the live channel. I must congratulate all for this very important event which has decision which has been taken by the government yesterday. So now we will also know what kind of patents can be possible. Will it be traditional knowledge? Because the fence which we created around our traditional knowledge, which was not actually encouraging us to get patent in that particular area, or aggregation and lack of access to that particular knowledge was an hindrance to the quicker progress in science and technology, which could have been more faster.
which is linked to traditional knowledge, and now that knowledge is all available to us. So and then I said कि मध्य प्रदेश का भी एक बड़ा रोल है और इसकी जड़ें वहाँ जुड़ी है। तो वो कैसे? जब 1995 में पेटेंट फैसिलिटेटिंग सेंटर हमने यहाँ बनाया था, तो ये सारी बातें जब अमेरिका में हल्दी के पेटेंट की बात हुई, उससे पहले नीम के पेटेंट की बात हुई, फिर बहुत सारे हर्बल रिलेटेड पेटेंट की बात हुई, सारा डर व्याप्त था, ट्रेडिशन नॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन नहीं था जब हल्दी का हम पेटेंट फाइल कर रहे थे। तो हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया और वो प्रयास ट्रेडिशनल नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने का पेटेंट फैसिलिटेटिंग सेंटर ने मध्य प्रदेश काउंसिल के साथ और सहयोग से मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में हमने ट्रेडिशनल नॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन किया, और एक और डिस्ट्रिक्ट था बस्तर, अभी शायद छत्तीसगढ़ में चला गया है। तो मध्य प्रदेश ने इस उत्साही स्कीम और उत्साही ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की जो शुरुआत की हमारे साथ मिलकर, तो हमने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया था। फिर उसी से कुछ आइडियाज़ इमर्ज हुए और फिर ट्रेडिशनल डिजिटल लाइब्रेरी CSIR ने एक पूरे देश में बना के अगले लेवल पर ले गए। तो जो भी बौद्धिक संपदा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए कैसे मध्य प्रदेश से हुई शुरुआत आगे बढ़कर आज सभी तक पहुंच रही है। तो ये वास्तव में सेलिब्रेशन और का मुद्दा है। और दूसरा, मध्य प्रदेश के लिए सेलिब्रेशन का मुद्दा चौबे जी ने बहुत अच्छे से बात कही, और उन्होंने बताया कि जो चंदेरी साड़ी का GI जिन्होंने लिया उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चंदेरी साड़ी का GI तब लिया गया था जब हम लोग GI को समझने की कोशिश कर रहे थे। GI कैसे होगा, नया नया एक्ट आया था, काफ़ी लोगों को समझ नहीं थी। और जो चंदेरी साड़ी का GI जो हुआ वो उससे लोगों तक बेनिफिट भी पहुंचा, एक केस स्टडी भी बना, हर जगह उसकी बात हुई। वैसे तो दार्जिलिंग टी सबसे पहले हुआ था, पर जो हैंडलूम में GI जो हुआ है वो चंदेरी साड़ी ही सबसे पहला था। तो मध्य प्रदेश से बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली हैं जिनको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर जो मध्य प्रदेश में है और भी एक्टिव हो और भी लोगों तक पहुँचे, और जो पेटेंट फाइलिंग है, डिज़ाइन रजिस्टर, हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में ज़रा फोकस पेटेंट फाइलिंग पे हो जाता है, बट हम दूसरे बौद्धिक संपदा अधिकारों पे भी थोड़ा अगर ध्यान दें और लोगों तक बात को पहुंचाएं, तो शायद हमारे पास और भी कई ज़्यादा चीज़ें होगी जिसे हम सेलिब्रेट कर पाएँ। तो मैं आज के दिन को बेसिक ज्ञान से नहीं जोड़ना चाहता था, बट कुछ ऐसी घटनाएं जो मध्य प्रदेश से जुड़ी है उनको सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। जब पॉलिसी की बात आती है, नेशनल IPR पॉलिसी की बात हुई है, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के IPR लॉज की बात होती है, वो बात हम हमेशा करते रहते हैं लोगों के साथ। अब अगर उस मुद्दों पर किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे एक्सपर्ट हमारे से जुड़े हुए हैं अभी, अगर आप सवाल पूछेंगे तो हम उन बातों का जवाब दे पाएंगे। बट जो पेटेंट की बातों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है वो हम दिल्ली में बैठ के सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो जब तक ये उत्साह दिल्ली से दूर दराज के गांव में पहुँचे, तभी ऐसे संस्थाओं का जो है काम करने का जो उत्साह बना रहेगा, और उसको सार्थक बनाने में, उसकी उपयोगिता को बनाए रखने और उसके प्रयासों को और सार्थक बनाने के लिए आप सभी लोगों तक हमारा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और हम सीधा सभी तक पहुंचना संभव ना हो हमेशा, तो जो पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर जो चौबे जी हेड कर रहे हैं और पूरी टीम बैठी है,
आपके लिए जो तत्पर है पेटेंट और आईपीआर संबंधित सेवाओं को देने के लिए, तो हमें उनके जज्बे को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हम ये सोचें कि दिल्ली से हम स्टेट कैपिटल पे चले, क्या उससे भी आगे जाना हमारा ज़रूरी है? हाँ, जन जन तक हमारा आगे जाना ज़रूरी है, उसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। संस्थागत प्रयास ऐसे हो रहे हैं कि चौबे जी और जो टीम है, ये ऐसे प्रयास करें कि हर विश्वविद्यालय में, हर तकनीकी संस्थान में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेल की स्थापना करें, और इन्होंने बहुत सारे जगह पे ये सेल की स्थापना की है। पॉलिसी में भी इन्होंने अपना हाथ बटाया है। तो इन सब प्रयासों के लिए और मध्य प्रदेश में आईपीआर की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास हुआ है, उन 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 सब के लिए मैं मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बधाई देना चाहूँगा। और इस माहौल में जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, असली आज़ादी, अब जो नया नारा प्रधानमंत्री जी से हमें मिला है, विकसित भारत 2047 तक, तो कैसे इस बात में हम सभी लोग प्रयास करें और कैसे इस विकसित भारत की जो कल्पना है उसको साकार करें, और बौद्धिक संपदा का इस विकसित भारत की कल्पना को साकार करने में क्या रोल हो सकता है, उसे नए तरीके से हमें समझना होगा। जो पेटेंट और लेटेंट दो शब्द आपने सुने होंगे। लेटेंट हीट की बात की, जो छुपी हुई है। पेटेंट का मतलब जो खुला हुआ है, जो ज्ञान डॉक्यूमेंट के रूप में खुला हुआ है, बट उससे मिले हुए और जुड़े हुए अधिकार लोगों के संरक्षित है। एक बड़ा जबरदस्त टूल है ये इनोवेटर्स के पास भी, और उस इनोवेशन को उपयोग में लेने वालों के पास भी। इसमें दोनों की जयकार है। इनोवेटर्स को एक कुछ समय के लिए ऐसा मोनोपोली राइट्स मिलता है जिससे वो दूसरों को रोक सकता है, बट उस समय की समाप्ति के बाद वो सारा तकनीकी ज्ञान पूरे समाज और दुनिया की सेवा में लगाए जा सकते हैं बिना किसी रोक रुकावट के। तो क्या ज्ञान के ऐसे सागर को जो एक जगह एकत्रित है, अलग अलग 7 समंदर एक ही साथ है, इनको इस ज्ञान के सागर में से पानी को निकाल के उसमें से विभिन्न प्रकार के अमृत रस इन्वेंशंस के रूप में अमृत काल में कैसे उपयोग में लाएं, उन बातों पे अगर हम जोर देंगे तो हम अगला जब उत्सव मनाएंगे, हमारा उत्सव से भी अधिक होगा। मैं ऐसी कामना करता हूँ। तो आने वाले सालों में हम कैसे हमारे बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षित करें, हमारे लोगों के बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षित करें, बट साथ ही मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि दुनिया भर में जितने इन्वेंशंस होते हैं और जो हमारे देश में प्रोटेक्टेड नहीं है, उनको हम कैसे उपयोग में लाएं बिना किसी रोक टोक के, जो हमारे को अवेलेबल है उनको कैसे हम काम में लें। देखिए, हिंदुस्तान में जो पेटेंट फाइल होते हैं करीब 60-70 हज़ार अब एप्लीकेशन फाइल होने लगी है। काफ़ी उत्साहवर्धक ट्रेंड है, और इस वर्ष एक और सेलिब्रेट करने की बड़ी बात है। पहले भारत में पेटेंटों की संख्या भारत वालों के द्वारा कम होती थी। ज़्यादा जो पेटेंट एप्लीकेशन इंडिया में फाइल होते थी वो विदेशी इन्वेंटर्स और कंपनी और इंस्टीट्यूट करते थे। वो हम पहले 13% थे, फिर 17% हुए भारतीय लोगों से भारत में पेटेंट फाइल करने का प्रतिशत। और पहली बार जो लास्ट क्वार्टर था 2021 का, जनवरी टू मार्च, पहली बार उस क्वार्टर में भारतीयों के द्वारा भारत में पेटेंट फाइल करने की संख्या जो है विदेशियों के द्वारा किए गए पेटेंटों की संख्या से अधिक हो गई। पहली बार पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसी एक घटना हुई है। तो ये हम सभी के लिए सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही उत्साही घटना है।
तो 3-4 ऐसी बड़ी घटनाएं हाल ही में हुई है बौद्धिक संपदा संरक्षण के एरिया में। एक और घटना हुई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड जो है उसको अबॉलिश करके नया एक रिफॉर्म लाया गया आईपीआर सिस्टम में, और जो एक बीच में डिले होने की संभावना थी उसको ख़त्म किया फाइनली दूसरे निर्णयों के लिए जो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कोर्ट में जाएं उसमें, और कोर्ट में सिस्टम को भी एक ठीक ठाक किया जा रहा है जिससे तीव्र गति से आईपीआर संबंधित केसों का निपटारा हो सके, जो ऐसी व्यवस्था विकसित की जा रही है। और अब एक और सेलिब्रेट करने की बात मैं इस पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और पेटेंट फैसिलिटेटिंग सेंटर के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो सुविधाएं अभी पेटेंट फाइलिंग और पेटेंट आईपी फैसिलिटेशन के लिए थी, अब उसको आगे बढ़ाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और आईपी लाइसेंसिंग की जो बातें हैं उसको भी इसमें मिलाया जा रहा है। और अब एक जिम्मेदारी हम सभी लोगों पे आएगी कि हमारे प्रयास जो है उस और भी बढ़े, और जो हमने एक कल्चर बनाने की कोशिश की थी, एक लोगों में जानकारी और लोगों में इस आईपीआर के प्रति कुछ एक्शन लेने की इच्छा जागृत करने के प्रयासों से सफलता पाई है। अब उसको अगले स्तर तक ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इन सब बातों के बारे में हम न कि लोगों को जानकारी देनी है, बट उनको खुद अपने प्रयासों से एक सच्चाई बनाना है, रियलिटी बनाना है। सो वी कुड सी आवर आईपी reaching from our institution or our people to market. So people to people connect, the complete cycle of innovation, protection, exploitation, and economic enhancement of the society is achieved through these efforts. So ये हम लोगों को खुद मिलके चीज़ें करनी होगी, और लोगों को भी सजग रहना होगा कि हम हमारे जो बौद्धिक संपदा के संबंधित कानून और जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कैसे चीज़ों को बदला जा सकता है। ये देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूजीसी भी अपना एक स्कीम लेके आया, कपिला स्कीम। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट पेटेंट कराता है तो वो रीएम्बर्स भी कर सकते हैं, जो जिनमें तकनीकी क्षमताएं हैं विश्वविद्यालय में। तो जहाँ भी हमारे जो आईपीआर सेल है अगर वो एक्टिवली करें तो शायद जो उस पर पेटेंट फाइलिंग पे खर्चे होने वाले हैं उनको रीएम्बर्समेंट भी ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का अगर सभी भागीदार और लोग उपयोग करेंगे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि निश्चित ही हमारे पेटेंट्स की संख्या बढ़ेगी, दूसरे आईपीआर्स फाइल करने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, और लोग दूसरे आईपीआर को भी हासिल करेंगे, और उन सब हासिल बौद्धिक पेटेंट और कॉपीराइट ट्रेडमार्क सभी हासिल करने के बाद उनको एक इकोनॉमिक व्हीकल के रूप में उपयोग में लेंगे और अपना और देश का जो है उत्थान करेंगे। और जो विकसित भारत का सपना देखा है प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक, उसको साकार करने में खास भूमिका निभाएंगे। तो मैं इसी आह्वान के साथ कि हम इस विकसित भारत के सपने को साकार करने में जुट जाएं, और जिस चीज़ों का सहारा लेना पड़े हमें अपनी बौद्धिक संपदा के संरक्षण के थ्रू करना पड़े, और जो बौद्धिक संपदा अब इन अ पब्लिक डोमेन आ गई है उसका उपयोग करके, तो यहाँ पे पेटेंट एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी कि हम उस जो पेटेंट अभी वैलिड नहीं है इंडिया में, जो पेटेंट भारत में ग्रांट नहीं हुए हैं, और जो तकनीकी नॉलेज उन पेटेंट्स में हमारे पास अवेलेबल है, उसको कैसे उपयोग में लाएं, हाउ वी कैन डिप्लॉय दोज इन्वेंशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर सोसाइटी to really become a developed nation.
सो इस आह्वान के साथ मैं आज की बात यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। अगर कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं कोई, तो अपना वीडियो एंड ऑडियो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें और अपना जो अनुभव है वो शेयर किया है। ट्रेडिशनल नॉलेज के रेफरेंस में आपने जो झाबुआ और बस्तर की बात की है, तो निश्चित तौर पर जो है परंपरागत ज्ञान में जो है ये क्षेत्र काफी समृद्धशाली रहे हैं। मैं आपको भी याद दिला दूं कि आपने भी जो है अपने एक प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन के एक्सपर्ट्स के साथ में झाबुआ में विजिट किया था, और जिस कड़कनाथ के लिए आपने उस समय पर जो इनिशिएशन किया था, वो कड़कनाथ और अतलामी से दोनों ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उनको मिल चुका है। साथ ही अभी रिसेंटली जो है मध्य प्रदेश के इंटर स्टेट बॉर्डर पर महोबा पान को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को, और नागपुर ऑरेंज को में भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो है संयुक्त रूप से जीआई है। सबसे रिसेंट जो जीआई यहाँ पर ग्रांट हुआ है वो चिन्नौर चावल को हुआ है, जो बालाघाट को बिलोंग करता है। बालाघाट जी। तो इस तरह से जो है जीआई की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसा आपने सुझाव दिया है, और आपके तकनीकी मार्गदर्शन में हम लोग लगातार जो है, जो भी हमारे पास इन्वेंटर्स या इनोवेटर्स आते हैं, और उन सभी को हम लोग हर संभव तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। जहां तक आवश्यक होता है, यदि किसी को पेटेंट अटॉर्नी की जरूरत होती है या टेक्निकल गाइडलाइंस की जरूरत होती है या डीएसटी को कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम आप लोगों से मार्गदर्शन लेकर के उनको प्रदान करते हैं। इसमें जो है ट्रेडमार्क और डिजाइन भी हमारे यहाँ से जो है वो फाइल कराए गए थे, और इनमें से कई जो है वो ग्रांट भी हो गए, जो मैं अपने प्रेजेंटेशन के दौरान भी उनकी संख्या बताऊंगा। साथ ही जैसा आपने कहा है कि हमको प्रधानमंत्री के जो विजन 2047 को साकार करना है, तो उसमें भी हमारे तरफ से प्रयास रहेगा कि आपके मार्गदर्शन में हम इस दिशा में भी ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें, और यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल्स में भी हम अप्रोच करके उन्हें आईपीआर अवेयरनेस दे रहे हैं, ताकि उनके पास से भी जो है वो डिफरेंट आइडियाज आए और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या फाइलिंग कराने के लिए वो आगे आए। तो और बहुत बहुत बधाई आपको कि जो आपने कहा है कि ट्रेडिशनल नॉलेज का जो लाइब्रेरी है वो हम सब लोगों के लिए, सभी लोगों को बधाई उस बात के लिए। जी। और साथ ही इस बात के लिए भी बधाई कि भारतीय पेटेंटों की फाइलिंग की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और हम विदेशी पेटेंट से ज्यादा यदि इंडियन पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं, तो ये सब हम लोगों के लिए भी बड़ी सुखद बात है। तो धन्यवाद सर। भविष्य में भी हम आपसे जो है वो सहयोग और मार्गदर्शन लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस कड़ी में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे महानिदेशक प्रोफेसर अनिल कोठारी जी भी लगातार परिषद को पिछले विगत 2 वर्षों से, जब 2 वर्षों से भी अधिक से जब से उनका नेतृत्व मिला है, परिषद लगातार जो है तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है। नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के लगातार जो है प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे हैं। अगले सप्ताह हम लोग जो है राष्ट्रीय विज्ञान, राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, साइंस फेस्टिवल भी करने जा रहे हैं, जो कि भारत का एक बड़ा क्रेडिबल प्रोग्राम है, जो भोपाल में मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको ऑर्गेनाइज करेगी। हमारे महानिदेशक महोदय ने राज्य के छोटे से छोटे स्थान तक भी जो है अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से अप्रोच करके उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनपुट और इंटरवेंट करने की का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही एक पेटेंट एंड टेक्नोलॉजी पूल भी काउंसिल में स्थापित कर रहे हैं, जिसमें जितने भी स्टेट के पेटेंट होल्डर्स हैं और टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है, एडवांस टेक्नोलॉजीज, उन सब का एक पूल बनाया जाएगा, जो कि इंडस्ट्रीज को या जिसकी डिमांड होगी ऐसे इंडस्ट्री या कमर्शियल सेक्टर के लोगों को वो रॉयल्टी के बेसिस पर उनको वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसी कड़ी में मैं आप लोगों के साथ में जब तक हमारे महानिदेशक महोदय जुड़ेंगे,
मैं परिषद द्वारा की गए जो पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर की उपलब्धियां हैं और हमारे जो विगत 1997 से जब से यह सेंटर कार्य कर रहा है तब से आज तक जो भी हमारे किए गए कार्य हैं उनका मैं आप लोगों को जो है प्रेजेंटेशन करूंगा। प्लीज स्टार्ट पीपीटी। वेलकम टू ऑल। आजादी के अमृत महोत्सव में STI फॉर आत्मनिर्भर भारत के लिए जो हम विज्ञान उत्सव के अंतर्गत सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस मंथ की जो थीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगस्त का प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज कर रहा है। पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेलकम्स यू ऑल। नेक्स्ट प्लीज। This Patent Information Center was established in 1997 with the support of Department of Science and Technology and PFC TIFED. These are some important objectives of the MP Council of Science and Technology to fulfill the requirement of science and technology of the state. Some important objectives are science and technology intervention for achieving the socio-economic objectives of the state, to advise government on policies and measures necessary to promote utilization of science and technology for achieving of socio-economic objectives of the state. In this connections, our Director General has taken initiation to finalize the science and technology innovation policy of the state, and it is final draft is prepared, and now it is waiting for the government approval. So after that, the government will release this STI policy of Madhya Pradesh to support financial and grant and promote and coordinate R&D projects and programs to achieve specific objectives and management of natural sources through various institutions and organizations in the states. For this, we have involved many colleges, universities, and the non-governmental organizations to implement the activities. To promote the popularization of science and technology, inculcate scientific temper and attitude, and creation of excellence and capacity building amongst the people of the state. To interact with the other state councils and national science and technology bodies with similar and related objectives. So we are sharing our knowledge with the other councils, and we are also getting the good activities and accepting the good activities of the other councils to promote the science and technology in our for the state peoples. To recognize through prize and awards for meritorious R&D work in science and technology, to accelerate the process of modernization of Madhya Pradesh through the use of science and technology. For this, we have also selected the priority area to work for the R&D. Next, please. So these are some important centers in the council: Remote Sensing Application Center, Rural Technology Application Center, Climate Change Research Center, Advanced Research and Instrumentation Facility, Center of Excellence in Biotechnology, MP Quality Assurance Laboratory, Professor T.S. Murthy Science and Technology Field Stations. Some other activities are also performed through various sections and divisions, which are Science and Technology Popularization, Research and Development Facilitation, Science for Socio-Economic Development, MP Mission Excellence Program, MP Science Network, Patent Information Center, Ujjain Dongla Planetarium Observation Complex, Observatory Complex, Establishment of Science Park in Jabalpur, Madhya Pradesh Research Atlas Program, MP Library of Science and Technology, and Publications and Public Relations. So all these are the activities which are also being performed by the MP Council of Science and Technology. Next, please. So these are the thrust areas which I have mentioned earlier,
that for the R&D projects, the climate change modeling, nanotechnology, water resources management, and watershed management, mineral investigations, rural technology, technology transfer, agriculture and food preservation, food fortification. In the agriculture, government of Madhya Pradesh has given a good opportunity to MP Council of Science and Technology. This is the fourth state which is implementing the agriculture-related reputed project in the state. So clean and renewable energy, waste management, health and hygiene, Narmada Seva Mission, themes for science and technology, program associated with national missions such as Make in India, Digital India, Startup India, Swachh Bharat Abhiyan, and any other areas which are related to the development of states. Documentation of traditional knowledge and practices. This we are doing since long back, and Dr. Yashwant has very well given a good news that the traditional knowledge library has been opened to the science and technology institutions and scientists so that they can know better about whatever is available in the document and library, and how this can be utilized for the commercial and industrial purposes. So apart from this, for the social science for socio-economic development, waste management under Narmada Seva Mission, health and hygiene for women, non-conventional energy, cluster development and skill development, women-centric programs such as Science Sammelan, women empowerment, and under the science population programs related to the Narmada Seva Mission, celebration of national, international days, years and themes, science fair, camps and Olympiad, children science congress are the regular activities which are being performed every year by the council. Next, please. Now we come to the Patent Information Center, which is working under the MP Council of Science and Technology. This is established on 10th March 1998, and presently it has the 2 employees are working at present. And Patent Information MP Council of Science and Technology provides the technical support to the grassroots innovators, academics, researchers, and institutions of Madhya Pradesh to know about the different types of intellectual property rights through various activities, queries, and IPRs from the inventors and innovators are quickly responded. And for this, we are taking the support from the TIFAC and patent offices and other PIC, other patent and IPR experts. As per the innovators' request, PIC provides the technical and legal support for obtaining the patent, including other IPRs on payment basis. So whatever fee and the attorney fees required, that has to be paid by the innovator and inventor. Requests for patent search are also entertained for scientists, universities, educational institutions, governments, industry, and POCs with the prescribed charges to create awareness about intellectual property rights in universities, industries, government departments, and research and development institutions. Assistance for the patent search, filing of IPRs, etc. are also being conducted. PIC works closely with the scientists and attorneys to meet their needs for patent information, conducting a variety of patent searches and providing a current awareness service. Till year 2018, PIC MPCST was as providing financial help to the grassroots innovators for filing provisional patent applications. After that, the patent filing fee support could not be continued due to these innovators due to financial constraints. Next, please. Many university, colleges, schools, academics, and industrial institutes are taking keen interest in IPR awareness activities and IPR filing. Study material and pamphlets and brochures on intellectual property rights in bilingual Hindi and English are being prepared in both languages for circulating in various intellectual property rights awareness workshops, programs, lectures, etc. in the state. Apart from the academic institutions, school, colleges, and universities, PICs is also conducting IPR activities in close collaboration with PhD Chamber of Commerce and Industry, CII, MSME, Government of India, Government of Madhya Pradesh, CWEI, CPAM, DPIIT, Government of India, Indian Patent Office, Mumbai, IECCI, etc. In the MP Council of Science and Technology website, in PIC brochure and patent filing applications forms are uploaded so that the inventors and innovators can get benefit by downloading these
forms and file their IPR applications. PIC literature, brochures and booklets are also uploaded in the websites of MSME, Government of MP, to help IPR filing by the industries and industries. Many innovators, academics, and researchers and institutes are coming forward to file various types of IPR applications through PIC MPCST. Till date, 14 patents are granted to inventors of the Madhya Pradesh. 14 trademarks are registered, and 4 copyrights and 4 designs are also being registered. And many more are in the final stage. Next, please. This is the statistics of the last few years, where the from the 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, and 22, 23 till present date, we have many patent applications were filed, patents are granted, copyright applications are filed, copyrights are granted, industrial design applications are filed, designs are also granted, trademark applications were filed, and trademark is also registered. Geographical indications filed. We do not have the financial support and the other support, so that the geographical indication applications could not be filed. IPR awareness workshop we have conducted 11 in 2016-17, 13 in 17-18, 15 in 18-19. In 1920, 5 programs were conducted, 20 to 21, 12 programs were conducted, and 21, 22, 22 programs are conducted. And till date, in the 22, 23, 17 programs are conducted in the hybrid mode. Some are offline and some are offline in the form of webinars. Next, please. These are the list of inventors who have granted patent till date. Sailen Virani has granted for auto disposable syringe in 2004. B.K. Tiwari has also got elusive belt aligned with extended zip patent in 2004. Bharat Gupta has got an automatic energy monitoring system patent in 2007. Mr. Anshul Agrawal has granted patent and improved concrete composition in 2014. Rajkumar Sharma has got patent on Navodaya building cooling system in 2019. Bharat Gupta, Raghavendra Kumar, Khede, and jointly they granted patent on liquid storing and supply tank 2019, and this product is being commercialized by the inventors at present. They have set up the industry also, and they are getting good response. Mr. Manish Agnihotri and Ms. Usha Dwivedi has also got patent and apparatus for cooling down a beverage container storing a beverage in 2020. Prashant Sahu with Sushil Keskasio has also granted patent in 2020 on a topical biodegradable gypsum nanogel for temozolomide in treatment of melanoma. Muralidhar Mahajan has got patent in 2020 on new techniques to maintain long life luster in copper. Mr. Suraj Singh, Swapnil Kumar Sahu, Vikas Gupta, and Sumita Harwar get a patent in 2021 on safety system for automobiles. Dr. Sanjay Sahai has got patent on improved method of detoxification of hemicellulose hydrolysate by combined treatment with lime and alum in 2021. Dr. Vijay Khaddar has got patent in 2021, a novel method for synthesis of phosphatic fertilizer for prospecting soils. Dr. Sanjay Sahai has also awarded with another, he granted another patent in 2021 for the improved method for detoxification of hemicellulose and hydrolysate by combined treatment with lime and whey. Mr. Naval Jain and Ashutosh Kumar Rai has got patent in 2022 for the data card for transmitting data. Mr. Ashutosh has also started their startup. Government of India, Defense Department of Defense, and Army is helping them very much, and they have started the startup. Now today he will also share his knowledge with the participants. Next, please. These are the registered trademark
which were granted for MP Organics in 2016, Beyond Gravity in 18, Mapping in 2019, Mapping again in 2020, Javi in 2020, Zaviflon in 2020, Zavi Spine in 2021, Zavi Tressil in 2021, Zavi Flow in 2021, Zavi Wave in 2021, and Zavi Euro in 2021. So these patents we are filed and they have got the patent. They are registered trademarks. Next, please. Apart from these activities, we are also doing the awareness programs in the school, colleges, universities, and in industrial institutes. These are the glimpses of our activities. Next, please. Next, please. These are some flags which we have prepared for the national webinars. Next, please. Next. And we have the many IPR cells in universities and institutes. This is the list that we have the 12 IPR cells in the various institutes of Madhya Pradesh, which were initiated from 2020 and 2021. We have established the IPR cells in IS University Bhopal and IS College of Technology Bhopal. Next, please. Thank you very much. For any query, we give these references to the innovators and inventors of the state, so they can easily approach to us to get the techno-legal support to file their IPR applications. Thank you, Bharat, very much. With this presentation, I would like to invite our key speakers. Of this program. The first speaker of this program is Dr. Ajay Sadashiv Thakur, who is Assistant Controller of Patent and Design, Patent Office, Mumbai. He has interacted since many years with the MP Council of Science and Technologies. He is very helpful. He has supported a lot to the Madhya Pradesh, not only to the council, but also to the institutes where the programs were conducted. He has invited in many institutes as an expert. So before inviting him, I would like to give his brief introduction that Dr. Ajay Sadashiv Thakur has obtained MSc degree in biochemistry from University of Pune. He also did postgraduate diploma in business management from Pune University, Masters of Management Science from Pune University, MPhil in marketing management from Pune University. He awarded PhD in marketing management from Pune University. LLB he did from the University of Mumbai. And for securing the highest mark in Mumbai University, he has received the Dr. Babasaheb Ambedkar Centenary Award. He has also completed his LLM in Intellectual Property Rights and Information Technology from the University of Mumbai in 2020. He has also obtained many certificate courses from the YPOS and in the National Institute of IPR, Nagpur and Mumbai. He has, before working in the Patent Office Mumbai, he has worked as Senior Scientific Officer in Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri, Pune, and he has also worked on deputation in RPG Life Sciences. Presently, he is working as Assistant Controller of Patent and Design since 2003, and his major work of he mainly performs the duties involve granting and refusing of the patent applications forwarded by the examiners, by conducting hearing, by analyzing the technology, legal examinations reports,
the examiner related to the patent applications under the Patent Act 1917 and analysis of such patents and non-patented documents cited for the investigating novelty and inventiveness of the invention claimed in the patent. He has also completed the summer training in the Agarkar Research Institutes in Pune, and he has also did his 6-month research project on from the Agarkar Research Institute, Pune. So he has also he has conducted more than 500 patent awareness programs in the various industries, universities, colleges, schools, and various seminars working in the Western Zone of India. Presently, he is the coordinator of National Intellectual Property Mission, Western Zone, under which he has conducted a lot of programs in the state and in the jurisdiction of Patent Office, Mumbai. So we are getting his constant support and very positive attitude for not towards the council but also for the institutes. And whenever we need his help, he is always available. So with these words, I would like to invite Dr. Thakur for his valuable words. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Am I audible and visible? Yes, sir. Okay. So, respected Dr. Kothari, sir, Director General of MP Council and Science Technology, and Dr. N.K. Chaube, sir, MP Council of Science and Technology Principal Scientist, and Amrit Shukla ji. I am very much thankful and I am welcome. I first of all congratulate you for organizing this program in your MP Council Science and Technology, the name of Vigyan Utsav. As we are aware of, and also with due respect to Dr. Panwar, who has already brought out the changes which has been taken place. Just now he has pointed out the traditional knowledge digital library, then certain programs which are being conducted, certain schemes that are available like Kapila and all the other initiatives which Government of India is taking. And here I would like to bring to your notice that just as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, and to make our India Atma Nirbhar Bharat, the Government of India has already been assigned the job to the Controller General of Patents and Designs, CGPDTM, sir, with the mission of training 10 lakh students to make them aware of the what are the intellectual properties and how these intellectual properties can be made. And so certain programs were conducted. And on the positive note that I would like to thank you that before the target was 14th August, but we have achieved this 10 lakh students awareness in 31st July 2022 only. So, we have already achieved the set target given by the government or the Honorable CGPDTM. And I would like to take this opportunity to thank Madhya Pradesh Council of Science and Technology, because of which we could conduct more than 100 programs in Madhya Pradesh with the help of Madhya Pradesh Council of Science and Technology. Dr. Chaube has given us immense support in providing this kind of technical how-know about these colleges and making us this program arranging in a successful way. He has coordinated with all these colleges and he has been very much active and has been very helpful for providing us the platform where we could conduct this program successfully. So I take this opportunity to thank Dr. Chaube and his team, along with Madhya Pradesh Council and Science Technology, that they have been part of this program and they have helped us in this achieving the set target. And I would like to bring to their notice also, right now, as a part of Nipan 2, that is National Intellectual Property Mission 2, which has been extended for another 75 weeks. So we would be again
conducting more programs, and we would have been getting the more target of making aware about these intellectual properties to the different organizations, colleges, schools in Madhya Pradesh. So we will definitely require your help, and I know that you will always help us, and you will always be there for us to achieve this target about making the students aware of the intellectual property rights. So with this, and as far as I know that MP Council Science of Technology is very active, and they had been always requesting us, and they're coordinating with the inventors, budding inventors, and helping them and sorting out their problems. They have contacted us many times regarding filing of patent applications, then regarding the technical know-how about trademarks, geographical indications that you are already aware of. Dr. Chobe has already brought to their notice that what sort of work they are doing. So I need not say much on that. As a part of this thing, and as far as our curriculum is concerned, as far as NIPAM is concerned, or before NIPAM also, we had conducted many programs in Betul district, where we went along with Dr. Chobe and his team to the primary levels in a very village places, where we conducted awareness programs in schools and even in colleges. And now the further mission would be to approach not only in the district part. I mean, we have almost covered Bhopal, or Madhya Pradesh, Gwalior, and Jabalpur, but now Betul also. But now the focus will be on the districts in interiors of the Bhopal district, maybe the villages, maybe the small towns where we can go and conduct these programs. So we will definitely require your help, and we will definitely be part of this. You also will be definitely part of this program. As far as technical aspects are concerned, we are always there, and Government of India is also facilitating all these sort of programs. Wherever we are required, we are always be there with the Madhya Pradesh Council of Science and Technology. So on that note, I would congratulate Madhya Pradesh Council and Science Technology along with Dr. Chobe and his team, that they are doing wonderful and remarkable work in the state of Madhya Pradesh, wherein they are continuously improving by filing more and more applications with regard to patents, then also with regarding to trademark filing, and then of course with geographical indications, and their work is going on in unstoppably. So we congratulate Madhya Pradesh Council of Science and Technology for doing all this kind of work and helping us also. So with this note, and I just wish them I wish them well future success. And as far as our part is concerned, we expect a coordination from their side with regard to achieving our further targets, so that we can achieve the dream of our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, to make a Vikasit Bharat, an Atma Nirbhar Bharat, and to facilitate all these programs. We would like to extend your cooperation for this achieving the set target. And now we have only covered more than 100 programs, but I suppose in the next 75 weeks, we will be coming continuously to Bhopal and Madhya Pradesh, and wherein we will be taking your help for conducting further awareness programs with relating to intellectual property rights and its awareness. So I need not go in much detail, and I thank you for all the for inviting me here. And if any questions are there, you can please unmute, and you can ask. Feel free to ask me at this juncture or any other sort of time. And always you can coordinate with Dr. Chobe. He will always be asking us, and we will always be there. So I wish them a luck, and thank you. Thank you for inviting me, sir. Thank you very much, sir. I would like to request you that you please also highlight the importance of commercialization, industrialization of IPR, and what are the importance and uses, and how it is beneficial for the economic growth. Please, sir. Yeah.
Certainly, intellectual property nurtures and encourages inventions and creativity, thereby contributing towards the cultural and economic development of the society. So, intellectual property is a multifaceted tool for which it provides encouragement to the inventors, authors, artists. Then it brings sustainability to the cycle of research and developments. Third, it grants protection to businesses against unauthorized use of their goodwill. Fourth, it contributes towards the poverty elevation of craftsmen who are grassroots geographical indications, authorized users. Then IP is a very effective tool for achieving the success or development of a country. So that relates to the aspect of promoting intellectual property, and the importance of the intellectual property cannot be denied. Many inventors are who are not aware of all these intellectual properties can be protected through their different intellectual property. So intellectual property is a bundle of right wherein we have different domains under which a different sort of protections can be given. That may be in the form of literary work, artistic work, that is in the form of copyright work. Then you can focus on design wherein shapes and designs of articles can are protected. Then of course goodwill of a product, that is in the form of trademarks. We can protect trademarks in that way. So that may be a sign, logo, or any other sort of thing which can be protected under the goodwill. Then also we have certain agriculture produces where we can protect them under the plant varieties. And we have then topography of integrated circuits, where in different integrated circuits are can be protected under this way. Then, of course, we have certain patents law wherein we can protect certain inventions, and so certain inventions which cannot be protected. So it is a humble request that once you are in a process of filing a patent, you need to conduct a thorough prior art search, and then of course you need to develop a skill to write a complete specification under Section 10 of the Patents Act. Then there are certain other issues, certain exceptions under Section 3 and Section 4 of the Indian Patent Act, wherein patents cannot be granted. For example, method of agriculture or method of horticulture cannot be granted. Method of treatment cannot be granted. Inventions which are against morality are also not be able to get a patent. Further, there are mere arrangement, rearrangement of inventions cannot be done. Instruments cannot be done. So there are certain technical aspects wherein we can where patents cannot be granted. So that also has to be taken into consideration. So there are certain tools or certain things where we need to focus on these. Mind you, intellectual property is not only restricted to patents. There are certain aspects where copyright, trademarks, geographical indications, plant protection of plant varieties, and other topography of integrated circuits. All these other intellectual properties can be focused, and they can be also given protection, or they can be taken protection. And I suppose Madhya Pradesh Council of Science and Technology is taking a lot of efforts to get all these things registered, to make it a common popularly in a popular way, that they are providing the support to all these inventors or the creators of this intellectual property by getting them registered in different way. That can be seen from their website. So the role of intellectual property here, you might be just aware of that our next theme, the theme which our Honorable Prime Minister has given thus is that Jai Jawan, after Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vignan, now Jai is now Jai Anusandhan. So mainly intellectual property's role in the future coming environment cannot be denied. And inventions and innovations are being given broad protections, and they are further development. They are further I say, they are the further things where for which with the help of which India can be made Atma Nirbhar, Bharat. So these are the tools where now focus is being given. So role of intellectual property in the present scenario and in future cannot be denied. And we urge or we request all the participants or the budding students, inventors to come forward and come out with their intellectual creativity and get it registered.
lot of support and lot of schemes of Government of India along with Madhya Pradesh Council of Science and Technologies are there. So we urge all these inventors to come forward and protect their intellectual property and ultimately lead to the development of our nation. So this is what we can say about intellectual property and further its uses. So this can be done through protection of these intellectual properties in different areas. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir, for your valuable words and encouraging us for the IPR activities. We are very thankful to you that you have conducted under the NIPAM more than 100 programs in Madhya Pradesh. And we assure you that in the future, we will also provide you constant support to conduct various programs and many more programs in the various parts of the states, in schools, colleges, and universities, and even in the academic, in the industrial institutes also. We will take your guidance and support continuously in the future, not only in the awareness program, but also in the filing of different IPRs. And very soon, I think the number of awareness programs will be conducted in the state with the help of MP Council of Science and Technology, jointly with the Patent Office. So, with your, we are very thankful to you for your encouraging words. And now, when and where we will need your help, we will definitely approach to you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Now, to extend the program, I would like to, I will call to Mr. Parag More, who is IPR attorney, Intellectual Platform Mumbai. He will also share his experience of Madhya Pradesh and whatever activities and potential is available in the state. So before inviting him, I would like to give his brief introduction that Mr. More is an IPR consultant having more than 14 years of experience in brand protection, product and process research, protection, technology selling and transfer agreement, patent, trademark, copyrights and design laws, and all forms of intellectual property aspects. He is managing IP and consultancy firm Intellectual Platform with his efficient associates. He is a patent and trademark attorney. Patents, trademarks, copyrights, and industrial designs are his primary practice areas. He is also expert in correctly recognizing clients and competitors' cutting-edge technologies and efficient brands. He has proven track record for protecting his client valuable intangible assets with patents, trademark, copyright, and other forms of IP. He has spread all the techno-legal activities of intellectual platforms and supervises the entity forms operations. He is also actively involved in the setting up of implementing, guiding of new strategies for the clients. Mr. More has good technical and commercial insight of technology-based and branding business. He has proven his ability in sequence a projector within a vertical and then analyze it threadbare on various dimensions with Ellen, including strategies, financial and legal viabilities. He has been instrumental in playing a key role in the client's business growth with his inputs in technology, strategic planning, and legal compliances. He has he's a master in science and LLM in IPR from the University of Mumbai. He is associated with many professional organizations for managing their IPR portfolios and is a regular speaker articulating his views on IP laws, enforcement, licensing, franchising, and technology transfer. He is registered to practice before the Intellectual Property Office in
He is registered to practice before the Intellectual Property Office India and is also registered with the Bar Council of India. He is on the role of patent facilitation for helping startups under the Startup India schemes of Government of India. He is associated with many renowned companies as an IP consultant for establishing IP departments and managing their IPRs. So with these words, I would like to invite Mr. Parag More for his valuable words. So he will share his experience and he will tell about the importance of IPR with reference to our state. More sir. लिस्ट में नहीं है हेलो म्यूट कर दीजिए हाँ मोरे साहब नहीं है क्या नहीं उनको जो है वो कनेक्ट हमने किया हुआ है वेबिनार का जस्ट शुरू we are waiting a few seconds to join him, and after that, we will hear his valuable words and his experience on IPR. I think Mr. More has not connected yet, so we will not wait him till long. So in the meantime, I would like to call Mr. Kalle Khan, Muzaffar Ansari, for his for sharing his experience on the importance of Chanderi fabric. So Muzaffar Ali sahab, Muzaffar Ansari sahab. Hello. म्यूट अरे फैसल हेलो हाँ हाँ हेलो मुजफ्फर जी आप अब सुन रहे हैं मेरे को हाँ जी 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 बिल्कुल आप वीडियो ऑन कर लीजिए और आप जी, जी, कहाँ जी, सुन रहे हैं जी। आप प्लीज अपना जो एक्सपीरियंस है चंदेरी साड़ी का और कहाँ कहाँ उसका क्या कॉमर्शियलाइजेशन है जो आपका इंटरेक्शन हुआ है नेशनल इंटरनेशनली वो सारा आप एक्सपीरियंस शेयर करिए थैंक यू सर उस वेलकम सभी महानुभावों को मेरे सादर प्रणाम मैं चंदेरी मध्य प्रदेश से हूँ चंदेरी हैंडलूम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और ये 700 साल का हमारा ये इंडस्ट्री है कॉटन इंडस्ट्री है और 100% यहाँ पर हैंडमेड काम होता है हम लोगों ने 2009 में कुछ आज की टेक्नोलॉजी को शेयर किया इसमें कि चंदेरी का जो हमारा इंडस्ट्री है ये बचा भी रहे और आज की टेक्नोलॉजी को हम जोड़े तो इससे हमने करीब 37,000
पुराने डिजाइनों को और नए डिजाइनों को डिजिटाइज करके और लोगों तक सेव करके भेजा। लेकिन इसमें जो है ना, हम लोगों को एक जो अभी इस वक्त जो है ना, जो हम देख रहे हैं कि जो डुप्लीकेसी होती है ना, इसमें चंदेरी का 70% माल जो है ना, हम बाहर जाकर देखते हैं तो सब नकली होता है उसमें, और चंदेरी के नाम से बेचते हैं लोग। जब उसमें कुछ खराबी पैदा होती है तो बदनामी होती है चंदेरी की, और उसका मुनाफा कोई और लेके जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिक्वेस्ट की कि क्यों ना इस पर जीआई मार्क का लागू किया जाए, और हमको वो मध्य प्रदेश में पहला मिल भी गया। लेकिन परेशानी इसमें साथ में हमारी ये हो रही है अभी तक कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करे, इसको लागू कौन कराए, वो कौन सी एजेंसी हो जो इसको स्ट्रिक्टली लागू कराए। और जब हम लोग इसको चंदेरी को हम बेचते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू भी बेचते हैं, एग्जीबिशन के थ्रू बेचते हैं, तो उस पर जो है ना जाकर चेक भी किया जाए कि आखिर ये चंदेरी से किसी बुनकर को बुलाया है तो वो चंदेरी का बुनकर है कि किसी और जगह का है, या नकली चीज बेच रहा है या असली बेच रहा है। उस पर अगर वो पकड़ा जाता है ना, तो उसको उसी जगह पर उसके साथ में गवर्नमेंट क्या करे, पनिश करे, या उसको हमेशा के लिए उसका आर्टिजन कार्ड को जब्त करे। इस तरह की चीजों से हम लोग जो है ना, चंदेरी हैंडलूम इंडस्ट्री जो 700 साल से 1304 से शुरू हुआ है, इस वक्त जो हम लोग सफर कर रहे हैं वो इस चीज से जबरदस्त कर रहे हैं। तो इससे हमारे न सिर्फ इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, बल्कि जो ट्रेडिशन हमारा भारत का पुराना ट्रेडिशन है, ये भी डैमेज हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग है ना, आदरणीय हम लोग गोवा भी इस पर एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ भी हमने अपना रिक्वेस्ट किया कि इसको बचाया जाए, और साथ में ना सिर्फ बचाया जाए लेकिन उन लोगों को इंडिकेट किया जाए जो रियल में चंदेरी के बुनकर हैं और चंदेरी के मास्टर बुनकर हैं, तो उनका कोई इस तरह का रजिस्ट्रेशन करके और जीआई मार्क का उनको दे करके, ताकि डुप्लीकेसी रोकी जा सके और चंदेरी को बचाया जा सके। ये हमारा चूंकि आप महानुभाव सारे सुन रहे हैं इसको, तो उम्मीद है कि इस पर कुछ हम लोग कुछ आगे कोई इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये बड़ी मेहरबानियां होंगी, और एक भारत का एक प्राचीन धरोहर उसको हम बचाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद सर। हेलो। हाँ अंसारी साहब, धन्यवाद आपके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और आपकी जो परेशानियां हैं उनको निश्चित तौर पर हम लोग जो है डिफरेंट फोरम पर डिस्कस करके और उसका जो भी पॉसिबल सोल्यूशन है वो निकाल करके आप तक पहुंचाएंगे, और आपके लगातार संपर्क में रहेंगे, ताकि जो है हमारे जो स्टेट के जीआईस हैं उनको बचाया जा सके और उनको धरोहर को जो है विकसित भारत के योगदान में उनका जो है उल्लेखनीय उपयोग किया जा सके। और थैंक यू सर। अभी हमारे एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो ओपन हो गई है साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो उस लाइब्रेरी की मदद से भी क्या हम लोग कुछ डिफरेंट डिजाइन या जो हमारा नॉलेज है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग जो है आगे भविष्य में जो है कोई योजना बना करके काम करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ कह रहे हैं क्या? हेलो। नो सर। थैंक यू। हाँ तो अंसारी साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य में भी हम आपको अपने प्रोग्राम में लगातार जोड़ते रहेंगे और आपका जो है वो अनुभव का लाभ लेते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। हमारे बीच में डॉक्टर मिस्टर पराग मौर्य जी जुड़ गए हैं, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज शेयर हिज वर्ड्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑन आईपीआर। मौर्य साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई एम ग्रेटफुल टू be present here and share some experiences in this wonderful program. Basically sir, IPR में मैं पिछले 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। I am a science guy who turn advocate. So मेरा जितना लगाव टेक्नोलॉजी से है उतना ही मेरा लगाव लॉ से भी है, और this is a unique field to practice and I will share some good experience with respect to IP laws in India. Basically we deal
मेजरली इनटू पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स, ना कि ओनली इंडस्ट्रीज बट एकेडमिक्स में भी आजकल इतना अच्छा रिसर्च चल रहा है, और वो जो रिसर्च है उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी है कि उसमें से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट या अच्छी प्रोसेसेस बन रही है। और मैं स्पेशली MPCST और डॉक्टर चौबे को भी इस बारे में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इसको सब चीजें प्रमोट की है कि लोगों को आजकल IP का इम्पोर्टेंस पता चलने लगा है। लोग खुद के टेक्नोलॉजी को, नए नए इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने के बारे में आजकल बहुत ही जागरूक बन चुके हैं। और हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि गवर्नमेंट ने भी इतनी अच्छी स्कीम्स लाई है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया है। दूसरा, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के लिए फीस जो है वो 80% रिडक्शन आजकल फीस में दिया गया है। एक्सपीडिएट एग्जामिनेशन की प्रोसेस लाई गई है, जैसे कि पहले बहुत सारे लोगों को लगता था कि पेटेंट मिलना मतलब बहुत मुश्किल चीज है और उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है या टाइम चला जाता है। बट अगर आप आज की डेट में फाइल करते हो पेटेंट और उसको सही तरीके से सब प्रोविजन यूज करके आगे बढ़ाते हो, तो आपका पेटेंट 7.5 मंथ्स में भी आजकल ग्रांट होता है। सो एक्सपीडिएट प्रोसीजर का लाभ हर कोई उठाए, ये मैं यहाँ पे अनुरोध करता हूँ। दूसरी चीज, फीस के बारे में, इंडिया में पेटेंट मिलने के लिए फीस जो है वो बहुत ही कम है। 1600 रुपीज में आप आपका पेटेंट फाइल कर सकते हो। उसके लिए आपको इस सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए पेटेंट ऑफिस भी अपनी तरीके से बहुत कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स प्रमोट की है। शायद इस प्रोग्राम में हमारे सर, मतलब पेटेंट ऑफिस में कंट्रोलर है डॉक्टर अजय ठाकुर सर, वो भी इस प्रोग्राम में है। तो उनके द्वारा या उनके इनिशिएटिव से या टीम के द्वारा भी ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों तक गवर्नमेंट ने IPR अवेयरनेस के बारे में प्रोग्राम किए हैं। और वो समय से पहले ही टारगेट अचीव कर लिया है, ताकि लोगों को IPR के बारे में पता चले, ये सिस्टम क्या है, पेटेंट कैसे मिलता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, पेटेंट क्यों लेते हैं। ये भी एक अच्छा, मतलब हम हमेशा जो सवाल हमसे पूछा जाता है कि सर ये सब करने की जरूरत क्या है। तो जैसे आप प्रॉपर्टी को लीगली प्रोटेक्ट करते हो, किसी पीस ऑफ लैंड या हाउस को जैसे आप प्रोटेक्ट करते हो लीगली, उसी तरीके से आपके दिमाग से जो भी निकलता है अच्छी चीजें जिससे समाज का फायदा हो, टेक्नोलॉजी की वजह से समाज आगे बढ़ सकता है, ऐसी चीजों को प्रोत्साहित करने के लिए उसमें भी लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, और वो है IP लॉज के द्वारा। तो पेटेंट में आप नई प्रोडक्ट या नई प्रोसेस प्रोटेक्ट कर सकते हो। 20 साल के लिए आपको मालिकाना हक उस पे मिलता है। ट्रेडमार्क के जरिए आप आपके बिजनेस का नाम, आपका ब्रांड, आपकी ब्रांड इमेज, ये सारी चीजें प्रोटेक्ट कर सकते हो, ताकि उसकी कॉपी ना हो, और आपने जो मेहनत आपके बिजनेस में की है, उसके लिए आपने जो आपके नाम को आगे बढ़ाया है, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। कॉपीराइट भी है, जैसे कि आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क, यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर लोग भी होंगे जो अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं, वो भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं कॉपीराइट के थ्रू। डिजाइन, जैसे कि हम नए नए प्रोडक्ट्स के लिए नए शेप में या नई आर्टिस्टिक डिजाइन बनाते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, वो भी हम डिजाइन के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर आप थोड़ी सी जानकारी इसमें ले लें और इस सिस्टम का पता करें, तो आप आपके दिमाग से जो भी अच्छी चीजें, जो कि प्रोडक्टिव क्वालिटी वर्क है, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, और उसके थ्रू नई नई इंडस्ट्री भी सेट होती है। मेरा एक रिसेंट एक्सपीरियंस है, मेरे एक क्लाइंट है जिन्होंने स्टार्टअप स्कीम के अंडर मेरे पास से फैसिलिटेशन लिया, 4 पेटेंट उनके ग्रांट हो गए। उस प्रोसेस में उन्होंने इतना नॉलेज गेन किया, मतलब आई वाज जस्ट हिज अटर्नी, जो मेरे पास प्रोडक्ट लेके आए, सर मैंने ये प्रोडक्ट बनाया और मुझे पेटेंट फाइल कराना है, मेरी स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। तो स्टार्टअप इंडिया के तहत हमने उनको फैसिलिटेशन दिया, उनको ब्रीफिंग किया, पेटेंट क्या होता है, प्रोसेस कैसा होता है, पेटेंट फाइल किया, एग्जामिनेशन हुआ, ऑब्जेक्शंस आए, उसको रिप्लाई कैसे करते हैं, उसमें सब में हमने उनको गाइडेंस किया, हियरिंग भी अटेंड की।
उन्होंने, उन सदगृहस्थ ने इतना नॉलेज हमसे पाया और वो खुद पेटेंट एजेंट की जो एग्जाम होती है, जैसे कि पेटेंट में प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्जाम आपको देनी पड़ती है, उसमें वो अपियर हो गए एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने एग्जाम पास भी कर लिया। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोगों को जितनी चीज ये मुश्किल लगती है उतनी मुश्किल है नहीं। अगर आप ठीक से कंसंट्रेट करो चीजों के ऊपर, तो आप भी आपके खुद के पेटेंट ड्राफ्ट करके फाइल कर सकते हो। अगर आप थोड़ी सी जानकारी ले लो तो उसमें एग्जामिनेशन रिप्लाई भी दे सकते हो। और खुद के पेटेंट के ऊपर उन्होंने आज अपनी कंपनी खड़ी की है, 4 पेटेंट है उनके पास, वो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें कंपटीशन नहीं है मार्केट में, और वो अच्छा खासा पैसा आजकल बना रहे हैं। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप भी आगे आइए, आपके नए प्रोडक्ट, नई प्रोसेस रहेंगी, उसको पेटेंट के द्वारा प्रोटेक्ट कीजिए। ट्रेडमार्क रहेगा तो ट्रेडमार्क आप आपके ब्रांड के लिए कर सकते हो। और कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आपके पास आज बहुत सारे रिसोर्सेस है, अच्छे अच्छे अटर्नीज, अच्छे एडवोकेट, अच्छे कंसल्टेंट्स आईपी में आज अवेलेबल है। आप उनकी मदद लीजिए और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन सब चीजों का फायदा करके लीजिए। एकेडमिक्स में भी इतना इतना इसका महत्व है। अगर आप इंडिया में पेटेंट फाइल करते हो आपके एकेडमिक्स में, और आपको आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, तो पेटेंट फाइल किया है इस 1 बजे के ऊपर, मतलब एक एक रीजन है जिसके लिए आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को जज किया जाता है। और मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है कि पेटेंट फाइलिंग की वजह से बाहर की कंट्री में जब भी उन्होंने एडमिशन ली तो उन्हें 6 लाख या 8 लाख तक की फी वेव ऑफ हो गई है। हर साल उतना उनको स्कॉलरशिप 6-8 लाख फीस वेव होके स्कॉलरशिप भी मिली है। तो अगर आपके पास सच में अच्छा रिसर्च कुछ बना है तो आप आगे आके उसका पेटेंट फाइल कीजिए, उसको अच्छे से प्रोसिक्यूट कीजिए और आपका इसमें फायदा ही होने वाला है। बहुत अच्छा फ्यूचर इंडिया के लिए है। और मैं लास्ट में एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के लोग बहुत ही लकी है जिनको एक ऐसा एमपीसीएसटी की तरह का सेंटर मिला है, जिसे चलाने वाले डॉक्टर चौबे जी इतने एक्सेलेंट नॉलेज उनके उनके पास है और इतना अच्छी तरीके से लोगों को वो फैसिलिटेट भी करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे साथ भी जब भी वो उन्हें कनेक्ट करके देते हैं, अगर किसी का कुछ काम रहेगा पेटेंट ऑफिस में, तो हम भी उनके वर्ड के खातिर उनके नॉलेज को और इसको सैल्यूट करते हुए वो काम हंसते हंसते करते हैं। आप बिल्कुल इन सब चीजों का लाभ लीजिए और आपके रिसर्च को थैंक्स टू डॉक्टर चौबे जिन्होंने इनिशिएटिव लेके ये अच्छा एक मिशन चालू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ भी सवाल रहेंगे आपके तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, हम यहाँ पे आपको बिल्कुल उसका आंसर दे देंगे। धन्यवाद मौर्य साहब, आपके एनकरेजियस वर्ड्स के लिए। आपने जो अप्रिशिएट किया है एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और मध्य प्रदेश को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आर&डी और आईपीआर की इंपॉर्टेंस बताई और एग्जांपल से बताया कि किस तरह से स्टार्टअप के लिए आईपीआर की फाइलिंग इंपॉर्टेंस है, और आईपीआर की फाइलिंग से किस तरह से फॉरेन कंट्रीज में आपको एकेडमिक एडवांटेज मिलता है, ये जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, निश्चित तौर पर हमारे पार्टिसिपेंट्स इसका लाभ जरूर लेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है आपने जो है वो बहुमूल्य चीजें हम लोगों के साथ में शेयर की हैं। भविष्य में हम निरंतर आपके साथ में जुड़े रहेंगे, आपकी मदद लेते रहेंगे और अपेक्षा रखेंगे कि मध्य प्रदेश के साथ में आप हमेशा जुड़ करके हमारे जो लोगों की है वो मदद करते रहें। साथ ही इस बात के लिए भी बहुत बहुत बधाई कि पेटेंट ऑफिस मुंबई की मदद से जो है निपेम प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग 10 लाख से अधिक लोग जो टारगेट से पहले जिनको जो अवेयर हो गए हैं, और अभी जो सेकंड निपेम 2 में 75 सप्ताह में मुझे लगता है कि ये जो संख्या है ये 10 लाख के बजाय 20 लाख भी हो सकती है। तो
इनिशिएशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अनुभव शेयर किया और हम आपका लाभ हमेशा लेते रहेंगे। इसी तरह से आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप लोगों ने मिस्टर मोरे जी को सुना। वो एक अच्छे पेटेंट अटॉर्नी भी हैं और एक अच्छे इंसान हैं। वो हर वक्त जो है हमेशा मदद के लिए उपलब्ध रहते हैं। उम्मीद है कि हमारे जो IPR फाइलिंग के एप्लीकेंट हैं वो हमारी इस सुविधा का लाभ जरूर लेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर आशुतोष राय, जिन्होंने 2022 में अपना पेटेंट ग्रांट उनको हुआ है और उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्मी के साथ में जो है टाई अप करके अपने प्रोडक्ट को, टेक्नोलॉजी को किस तरह से हेल्पफुल बनाया है, वो अपना एक्सपीरियंस हम सब लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो मिस्टर आशुतोष, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू चौबे सर, थैंक यू अमरीश सर इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। एंड डेफिनेटली आप ही लोग से गाइडेंस लेके कुछ चीज़ें मैंने सीखी है और वही मैं सबके साथ शेयर करने में अपनी खुशी फील करूँगा। सो फॉर एवरीवन, आई एम आशुतोष राय, founder of Starbrew Tech Systems Private Limited, a company which is working in defense sector. Basically, we have started everything in the field of embedded hardware development and software application side. So पहले starting में we were used to serve industries and companies, especially MNCs like Borg Warner is one of them, Schaeffler, ये automobile sectors की जितनी बड़ी industry है उनको हम शुरुआत में सर्व कर रहे थे। एंड विथ emerging technological advancement जो कि हमारे vehicles में add हो रहा था, we have implemented a lot of parts over that, but we were not aware about the patent things कि patent कैसे फाइल करते हैं, क्या होता है। और इस कारण कई चीजें जो हमने शुरुआत में अपने रिसर्च की बनाई वो हम कभी उसको फाइल नहीं कर पाए और कभी वो हमारे एडवांटेज में उस तरीके से नहीं आ पाया जितना हम पहले ले सकते थे। देन सडनली वी मीन्स एक सीरीज है जिसमें हम अलग अलग चीजें, न्यू इनोवेशंस, नई चीजें इंप्लीमेंट करते आ रहे थे कंपनीज के लिए। सिमिलरली वी कम इन टच विद इंडियन आर्मी, उनके कैंप में हम लोगों ने कुछ ऑटोमेशन की चीजें इंप्लीमेंट की। वहां पे एक प्रोडक्ट आइडिया हमको दिया गया एंड द ऑफिसर, कंसर्न्ड ऑफिसर जो थे, वो उन्होंने बताया कि इफ यू विल एबल टू इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ सभी को, सो यू विल बी द वन, एंड इसके लिए आपको पेटेंट मिल सकता है। एंड वो पहला एक स्पार्क था जहां से पेटेंट वर्ड दिमाग में आया कि अच्छा ऐसा भी हम कर सकते हैं क्या, कि कोई ऐसा फिक्स चीजें जो हमारे ही कंपनी या नाम पर हो सकता, उसके बाद हम उनका लॉन्ग टर्म एडवांटेज ले उनके बॉर्डर एरियाज में या फिर ऑपरेशन, जैसे जीएसएम नेटवर्क पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उस टाइम पे यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए उस पर्टिकुलर टाइम के लिए दे वांट समथिंग सो दैट दे कैन कम्युनिकेट अमॉन्ग देमसेल्फ इन अ विजुअल फॉर्मेट। दैट मीन्स कि अगर हम उनको कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे पा रहे हो जो कि विजुअली कम्युनिकेट करने में हेल्प करे उनको, दैट वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो वी कम अप विथ अ सॉल्यूशन named as TVWDM, Tactical Visual Wireless Data Module, a combination of hardware and software which connects with their existing radio network, जो उनका ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर एरियाज में या सर्विलेंस के लिए, उसी में हम अपने पूरे सिस्टम को कनेक्ट करके एंड देन वी इनेबल्ड अ वॉइस सेंट्रिक डेटा। लाइक हम सभी ने देखा है, मूवीज में भी देखा है कि वॉर टाइम पे जनरली they used to communicate with the voice only. They report their officers at the back, जहाँ पे बड़े ऑफिसर्स होते हैं और जो फील्ड पे जवान होते हैं वो एक दूसरे से रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू बोल कर हैरो चार्ली 123 123 समथिंग लाइक दैट। सो वी डेवलप्ड अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम व्हिच कनेक्ट विद द सेम थिंग. Finally they would able to send live streamings
GPS locations, everything, that too without internet or without SIM card. एक लेमैन लैंग्वेज में एक व्हाट्सएप जिसमें इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं, कोई वाईफाई, कोई ब्लूटूथ नहीं, कुछ भी नहीं, स्टिल वो पूरा व्हाट्सएप जंगल के एरिया में भी या कहीं भी वो रन करेगा. सो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब डेवलप कर रहे थे तो वी वेयर इन द सर्च ऑफ द पीपल कि कौन हमको अब हेल्प करेगा, ये जो पेटेंट होता है ये क्या होता है, IPR उस कंसिडरेशन अच्छे से सपोर्ट मिलेगा नहीं, पता नहीं ऑफिसर्स हमको प्रॉपर रिस्पांस देंगे कि नहीं, चीजें समझ में नहीं आएंगी, कैसे होगा. बट वी फाउंड डॉक्टर चौबे फायदा उठा सकते हैं, वो सारी चीजें सर ने बहुत अच्छे से डिस्कस करी. एंड देन वी केम टू नो अबाउट इट in 2022, like sir has already told in the starting, we got that the patent has been granted. And defense, Ministry of Defense में particular product has been taken in a very aggressive manner कि ये तो बहुत जरूरी प्रोडक्ट है और ये आर्मी में जाना चाहिए. So we have got the funds from Ministry of Defense also. Recently we got 1.5 CR of fund. And ये फंड है एक कंपनी को प्रॉपर शेप देने के लिए. लाइक वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द कंपनी, प्रोडक्ट बनाया, बट how it can be enrolled in a company, how it can be commercialized. For all that thing, we got the डिस्कशन के बाद क्या होगा, कैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, दैट एवरीथिंग इज फाइन. बट इनिशियल स्पार्क जो डॉक्टर चौबे सर ने हम लोगों को दिया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हुएवर इज प्रेजेंट हियर और जिसकी भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या उनके कोई टच में आता है, तो आई रिकमेंड कि आपको सर से मिलना चाहिए. एंड बहुत अच्छे से चीजें गाइड होती हैं. हाँ, एक दो चीजें जो आती हैं जो टाइम के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने सही किया है, दैट इज कि जब हम पेटेंट फाइल करते हैं और पेटेंट ग्रांट होता है, द टाइम लैग इज टू मच. और ये जनरल कॉमन प्रोसेस है, दैट इज नॉट इंडिविजुअली हमारे केस में ऐसा हुआ, ये सभी के केस में ऐसा होता है. बट उसको भी इंडियन गवर्नमेंट ने रेक्टिफाई किया. इफ यू आर अ स्टार्टअप एंड यू आर अप्लाइंग फॉर अ पेटेंट, सो आपको मिनिमम टाइम फ्रेम में, दैट इज समथिंग 6 months to 1 year, समथिंग लाइक दैट, जिसको बहुत कंप्रेस करके एक छोटा टाइम फ्रेम बनाया गया है, उसमें ये पेटेंट ग्रांट हो जा रहे हैं. एंड डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड डिसीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑल्सो. क्योंकि हमारे ही केस में ऐसा कई बार हो रहा था कि वी गॉट सम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बट बिकॉज वी डोंट हैव पेटेंट एट दैट टाइम, तो हम लोग प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में नहीं आ पा रहे थे. Now we started, after grant of that patent, we started to take product in the market. Currently, we have sold 126 pieces to Indian Army, and it is deployed in the northeast region at LAC, India-China border. It is deployed in Siachen, in the Rajasthan desert areas. The product has been deployed. So the product is being accepted in a good manner. और इन फ्यूचर इसको बड़े स्केल पर कमर्शलाइज करने का भी हमारा प्लान है, एंड इसको लेकर आगे बढ़ने का प्लान है. सो दैट इज आई थिंक ऑल अबाउट माई सेल्फ. ऑल्सो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वी हैव अप्लाइड इन अ स्कीम नेम्ड एज टाइड, TIDE, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. So they have also granted us with 40 lakhs of fund. So ये भी एक ये है कि एक बार हम अच्छा प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं और उसको पेटेंट एंड ऑल IPR करके सिक्योर कर रहे हैं, so we are open to present the product at in every competition, and lot of competitions are being organized these days by Indian government. So बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, बस हमको एक शुरुआत करने की जरूरत है. So thank you everyone for listening me. And कुछ भी अगर किसी को कोई, like I have gone through all those process, तो सर के पास भी जाने से पहले अगर किसी को कोई छोटा मोटा डाउट या कुछ वैसा रहता है, so I am happy to answer those queries. Thank you. थैंक यू आशुतोष. आपने बहुत बढ़िया और एनकरेजिंग काम किया है
और निश्चित तौर पर आपकी बात को सुन करके हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जो एकेडमिक्स हैं वो निश्चित तौर पर आगे आएंगे। और आईपीआर और स्टार्टअप दोनों ही जो हैं एक दूसरे के कंटेम्पोररी हैं। और Right, sir. आपने जो है वो सिद्ध करके बता दिया है कि यदि हम आईपीआर ग्रांट हमें होता है तो निश्चित तौर पर उसका स्टार्टअप में या आपके उसके कमर्शलाइजेशन में बहुत फायदा मिलता है। और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी प्रोसीजर को और इजी किया उससे, और जैसे पराग मोरे जी ने भी बताया है कि मिनिमम 7.5 मंथ्स में भी आपको पेटेंट ग्रांट हो सकता है। तो ये जो है प्रोसेस स्टार्टअप को एनकरेज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए हमारे एंटरप्रेन्योर्स को बहुत फायदेमंद होगी। तो Yes, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर हमारे Thank you, sir. या ऐसा आता है और कोई देखना चाहता है या आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहता है तो निश्चित तौर पर हम आपकी मदद भी फ्यूचर में लेते रहेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you. Yes. मिस्टर आशुतोष राय के एक्सपीरियंस के बाद में अब हम लोग आज के कार्यक्रम के अंतिम चरण में बढ़ रहे हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स जो हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं निश्चित तौर पर आईपीआर की इम्पोर्टेंस को समझ रहे होंगे कि देश के को विकसित बनाने में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और किस तरह से इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो हर एक के जीवन में है। और साथ ही अब यदि आप आईपीआर जो होल्डर नहीं भी हैं या नहीं ले पा रहे हैं वो जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज के किसी ना किसी टाइप को आप कमर्शियल वैल्यू में कन्वर्ट करके उससे जो है वो आर्थिक लाभ ले सकते हैं। तो कार्यक्रम का अंतिम समय आ गया है और कार्यक्रम के अंत में मैं आप सभी लोगों को जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर यशवंत देव पनवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनके लगातार लीडरशिप में और उनके एडवाइस पर हम लोग आज ये जो कार्यक्रम है वो इसको कर पाने में सक्षम हुए हैं। आज उन्होंने हम लोगों को जो एनकरेजेस वर्ड्स दिए हैं और हमारा जो सहयोग कर रहे हैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य में भी हमें उनका जो है वो हेल्प मिलती रहेगी। इसी प्रकार हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर अनिल कोठारी सर, वो उनका लगातार प्रोत्साहन और सपोर्ट हमको मिलता रहता है जिसके कारण हम ये सारी एक्टिविटीज संभव कर पा रहे हैं। उन्हीं के गाइडेंस में ही जो है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी और पेटेंट पूल टेक्नोलॉजी पूल जैसे जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो अपना मूर्त रूप ले पा रहे हैं। साथ ही मैं आज के जो हमारे की स्पीकर्स हैं डॉक्टर अजय ठाकुर और पराग मोरे, उनका ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनका लगातार सहयोग हमें मिलता रहा है और इसी तरह का सहयोग हमें और गाइडेंस मिलता रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर रश्मि मैम और रविकांत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का जो प्रोग्राम है वो डिजाइन किया है कि आज हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। मैं सभी काउंसिल्स के जो ऑफिसर्स हैं, मेंबर सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मिस्टर आशुतोष राय और मिस्टर मुजफ्फर अंसारी, मिस्टर कल्ले खां, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए निश्चित तौर पर जो नए इनोवेटर्स हैं या जो आपका आईपी यूजर्स हैं, आईपी के एप्लीकेंट हैं, वो भी सामने आएंगे और हमारे प्रदेश में जो है आईपीआर को प्रमोट करने में उनका महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। परिषद के और एकेडमिक्स इंस्टीट्यूट्स के, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के वे सभी पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, वो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने जुड़ करके और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। निश्चित तौर पर भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम इसके लिए हमेशा तैयार हैं। कभी कोई भी क्वेरी हो तो वो हमसे भी कर सकते हैं और यदि हमारे लेवल से ऊपर होगा तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कंसर्न अफसर्स हैं उनसे कंसल्ट करके उनकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अंत में मैं परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है उन सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
और साथ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यही आज का कार्यक्रम जो है वो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.